नर्मदे हर। हम अभी श्री फोरला गारदा पावरा आश्रम में है, गांव बावरी। इधर का जो मेन आश्रम है ये नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये इधर का रसोई है। नहीं, पैदल पे है, पैदल पे है। इधर का माहौल है। और ये महाराज जी ने नर्मदे हर, ये महाराज जी अभी आश्रम चला रहे हैं। मैया ऐसा ना, वहाँ पे पेड़ लगे, मैया नीचे पेड़ लगा हुआ है। और महाराज जी आपके नाम? मेरा नाम प्रशांत पुणे से। ओके। और इस आश्रम के बारे में? ये फोरला गारदा पावरा नाम की एक आदिवासी 35 साल से शिवपाणी की गाड़ी में वो सेवा देते थे। तो ही वॉज वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ सेवा इन शिवपाणी गाड़ी। तो इनका ये घर है, ही वॉज हैविंग 18 किड्स। तो अभी इनके जो बच्चे हैं वो सब ये सेवा कार्य करा रहे हैं। यहाँ पे पूरे क्षेत्र में थोड़ा एजुकेशन की थोड़ी कमी लगी हमको, तो इसलिए अभी हमने स्कूल चालू किया यहाँ पे। अराउंड 150 और स्टूडेंट्स आर टेकिंग एजुकेशन है। पूरा आदिवासी लोग है? हाँ, पूरा आदिवासी सब, ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है। तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तीनों राज्यों में पूरा आदिवासी क्षेत्र है। नर्मदा खंड को फूलपानी गाड़ी के नाम से यहाँ पे, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है। हाँ, माउंटेन्स में ऑल बैरन। तो वी आर ट्राइंग टू डू रिफॉरेस्टेशन ऑफ दिस एरिया। यहाँ पे 16,000 पेड़ हमारे लगा के हुए हैं। अभी 5 पेड़ों को पूरा पानी चल रहा है। हाँ, ये तो आगे परिक्रमा वापसी जा रहे हैं, तो उसी मार्ग में हमने सब ये पेड़ लगाए हुए हैं। ओके। और वहाँ पे कंटिन्यूसली उनको पानी चल रहा है। ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ये दिनेश पावरा, दिनेश पूरे वाला, ये यहाँ पे स्कूल चलाते हैं। इन्होंने 12वीं तक एजुकेशन लिया था। तो ये और इनकी पत्नी मिला के यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं। यहाँ पे और कुछ हमने ऐसे कोशिश की, जैसे अभी ये गौशाला बना रहे हैं। ये परिकांशी के लिए टेम्पोरी निवारा बन रहा है। हाँ, वो जो चमक रहा है दैट इज सौर चूल्हा। हाँ, इस पे वी कुक राइस ऑन सोलर पावर। यस यस, आई हैव सीन इन शिरडी। अवॉइड यूजिंग एग्जैक्टली, शिरडी में देखा था वी मैं। हैव प्रोक्यूर्ड इट फ्रॉम द सेम गाय ओके। हु हैज ब्रॉट इट इन शिरडी। शिरडी में बहुत बड़ा है वो वाला दिस इज आवर सिस्टम। नर्सरी। या तो यहाँ पे पेड़ बना के देवराई करके संस्था है पुणे में। दे हैव डोनेटेड 16,000 ट्रीज। और अभी और 3-4 हज़ार पेड़ हमने लाए हैं। तो कुल मिला के ये हैव कैपेसिटी ऑफ 55,000 ट्रीज वी कैन मेक है। तो उसको पूरे क्षेत्र में 7-8 गाँव में हम पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ पे वी अवॉइड यूजिंग टिम्बर फॉर कुकिंग। तो गोबर गैस इज देयर, इट इज सक्सेसफुल और नहीं, दिस सौर चूल्हा इज देयर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी कलेक्ट द गार्बेज thrown away by परिक्रमा ऑफिस and we dump it into briquettes and use those briquettes for cooking fuel. महिलाओं को स्वयंपूर्ण बनाने के लिए हम इनको स्टिचिंग का एजुकेशन। ओके। जैसे अभी इसका ये पूरा हाँ हाँ, मंडप जो है महिलाओं ने सिया है यहाँ पे। हर परिक्रमा से के लिए यहाँ पे एक भवन बना रहे हैं, ये समाज भवन है। ये गौशाला, ये 2-3 घर अपने, ये पूरा उनके परिक्रमा के लिए तो इनफ जगह यहाँ पे है। यहाँ पे हमने we have built 36 small loose boulder dams. One big dam is there. This one. ओके। You can see the wall right? हाँ That is the dam. And we have dug 4 wells. तो उसके ये जो सोलर दिख रहा है अपने हाँ सोलर है, हाँ हाँ, उसी का नीचे जो कुएं में से पानी लेके पहाड़ के ऊपर जा रहा है। ओके ये परिक्रमा का सबसे कठिन टप्पा मानते हैं, तो भावरी से खापरमा। ओके। दिस इज द माउंटेन ऑफ खापरमा।
तो ये सबसे कठिन टप्पा जो है उसको सुलभ बनाने की हम कोशिश करें पेड़ लगा के, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश हम करें इस क्षेत्र में। ये वासुड़ी देख रहे हैं, झाड़े खाते और कितना लोगों को आप सेवा कर रहे हैं हर रोज? यहाँ पे ना परिक्रमा के पीक टाइम पे 450 to 500 people per day we serve. मुक्काम के लिए फॉर स्टे देयर आर अराउंड 200 people average on an average. So in month of November and December we have around 150 to 200 people per day for stay here. वो पीक टाइम बोले तो कौन सा पीक टाइम? टाइम मतलब जो त्रिपुरारी पौर्णिमा को परिक्रमा उठाते हैं लोग, तो ओमकारेश्वर से अपना 8वें दिन में या 10वें दिन में आ जाते हैं। हाँ हाँ, तो वी हैव वी गेट मैक्सिमम लोड। ओके। यहाँ से समुद्र पार होने के बाद धीरे धीरे पीपल स्टार्ट ड्रॉपिंग। कंप्लीशन रेट ऑफ परिक्रमा इज 12% ओनली। ओके, आउट ऑफ 100 ओनली 12 people will complete it successfully on their own feet. Otherwise somebody will take lift or something like that, or half of the people will go away. सब होता है। So success rate is little less, but for us it is 100%. Successfully everybody comes here and we get a chance to serve. yeah, in front of me itself almost I have seen around 8 people gone on. Yes. Means हाँ we in without my sight हाँ। many people have Correct. gone back. So we urge here, whenever they are having food, no, I request them. So this is the toughest part, and that's all. Afterwards, we don't have anything as tough as this. So please don't go away. That's how I want to say. When we are on the, I think on the 10th day we are at a place in ashram. They said that there is a cheetah in the way. हाँ Yesterday night it came near to the ashram. हाँ So उसमें दो बंदा डर के मेरे को तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो घर जा रहा हूँ बोल के बैग उठा के बस में से घर चले गए. I avoid telling all these things on camera, but let me tell you. Yeah, it's We have happening. It leopards is the truth. It is we the have truth. leopards, my friend. we have hyenas. Last month only we had a beautiful territorial fight between two big male tigers in our Deorai state. Mhm. So we have covered all the area using fencing. Within our fencing, two tigers had a territorial fight. Can you imagine? For 6 minutes they were fighting. We all have heard it. So it's a good sign. See, it's a jungle. It Yes, belongs to yes, them. yes. This We land are belongs coming to their place. They are not coming to our place. We have no rights of cutting the tree, and we don't have any right of removing their habitat. You look at these mountains. Yes, yes. Not a single tree is there. So we are trying to reforest this area as far as possible. The main thing also, the parikrama people also should learn the rules and regulations of the parikrama also. Maximum people doesn't know the नियम and जो rules follow करना है, कैसे रहना है इधर, without knowing I've that seen coming the people, because I have seen a police officer. He is an IPS officer, retired IPS officer. I met him on the 5th day or 6th day in an ashram. Haryana. I don't know his name and I didn't. He spoke to me 5 minutes. That's it. When I am taking the video, he asked me where are you from, and I just 5 minutes of discussion. He told he is a retired IPS officer and all. In that duration, we have seen the bathrooms are very dirty, and he himself went and washed the bathrooms. I have seen that, and I felt very bad. Then IPS officer, such an educated. IPS means not an easy thing. He spent half of his life in studying to become an IPS officer. So what we are doing in parikrama is spoiling the washrooms for the ashram areas and everything. The dignity of ashram is not maintaining here. This sand has come for the construction of toilets. Okay. We are constructing toilets here. That I want to make a video. The full video should be about what are the rules and regulations, how It should be the there. dignity of the ashram should be maintained. People leave this ashram at 2:30 AM. Can you imagine? 2:30 AM. It's a tiger reserve. It comes under Satpura Tiger Reserve. Just next to it, it is Guru Varsha Sanctuary. We are on the last mountain of Tornama Sanctuary. So these are all natural sanctuaries. There are having so many animals here, and at 2:30 AM if you are living in this ashram, very bad thing. You should think about the wildlife also. You have to. Because this is their area and the people are Their territory. giving chocolates to the people. That
ridiculous thing, most ridiculous thing you can do with the kids in Israel. how the kids are habituated is first they ask for chocolate, no chocolate, then for biscuit, then no biscuit, then ask for money. You are making them beggars. Very bad thing. And the In our third school, thing is, not a if single they school will started eating chocolates, they live on the tribal because they live on their own body power, strength, Correct. not mind power. They live on strength. Right. When you are eating chocolates and biscuits, the whole power of their body will lose. Correct. What their parents have, Ah. that power will not come to their kids. Half of they are having, toothaches and all this problem. These are never How Anjira mein. सब जगह बोलता है, बड़वानी में बिठा के बोल रहा क्या चॉकलेट बिस्किट नए. अभी हमने सब बड़वानी जाके बोलते हैं बड़वानी से बताना चालू किया है. बड़वानी का जो मंदिर है ना, उनको हमने विनती किया कि आप ये बताओ, और वो बताते हैं कि आगे चॉकलेट मत खिलाओ. हाँ, ये बताना चालू किया. हमारे आश्रम में भी हम बताते हैं कि आगे बच्चों को चॉकलेट मत बांटना, मूंगफली दे दो, कुछ अच्छा दे दो, गुड़ दे दो. बिस्कुट भी नहीं, वो भी बेकार ही है, लेकिन चॉकलेट तो बहुत ही बेकार है. They are eating as many as 50 to 70 chocolates per day per kid. हाँ, easily. See, Maximum 300 to 400 people will cross I the. myself collect 2.5 kgs of plastic minimum in this area per day. So that is another thing to be taught to Parikrama also. You are there for doing Parikrama, not for spreading plastic. You see We after came for Parikrama, we should take care of Parikrama and go away from there. We should not disturb the lives of the tribal people and their livelihood. Because if we disturb their livelihood, they can't work further in this tribal area. See how it has affected. I'll tell you one small example. They had never seen plastic in their life. The moment they got the plastic bags and all, now they are cooking their bhakri, that jawar ka aur bajra ka roti. They are cooking it on plastic. They don't know The next They don't know consequences. Exactly. How cancerous it is, they don't know, and they all are eating bhakri made of plastic. Very bad thing. And it is donated by us Parikramasis. We should avoid all these things. अभी वो मशीन दिखाएगा. हाँ. So this car is donated to us by person in Pune, Okay. because even for buying machis, we Yes, have to go yes, 90 yes. kilometers. Yeah, I have seen that. Narmada. For everything, you should go a long way for everything. See, this is the machine Okay. where we collect all the garbage, like this, all this paper waste. We dump it, we mix it in cow dung, and then we compress it using 10-ton jack. We have got another 100-ton jack again. So it is compressed in this container, and then it turns into briquette. I have seen the wood briquetting machines in Pune. Pune and Bombay, that is very popular. It is as tough as wood. You can see the weight, it's very heavy. It burns like wood. So we are using this for cooking. Basically, we are recycling all this stuff. Everything, but we are avoiding using concrete here. For here also, we have used the ready-made pillars. We have avoided using wood. The house that we are building there, it is the first house built by the father. Okay. We purchased it from the guy who has bought it. Yes, see the wildlife. It's very apparent. You can see many animals, snakes. We have taught children to catch snakes, everything. See. Very beautiful. I have did that also, snake rescue. ये ब्रिक्स ये लोग खुद बनाए हैं इधर ही. इस solar plant के using the solar plant they will be doing the cooking and other things, the kitchen works. And this is a new shed is under construction for Parikramavasi.
नर्मदे हर. These are the tailoring machines which they are giving the training for the tribal people. Another machine. Narmade Har. So this is a This is a gobar gas plant. It's a Mexican technology, system ordered bio. They have installed it. It is manufactured in Pune itself. It is 22 feet by 8 feet by 5 feet deep. It's a balloon. They have patented this material. It is guaranteed for 30 years at least. So this is model 16. So 16 cow dung is dumped into it every day. It requires a lot of water actually. If you have good amount of water, then I would highly recommend this plant for everybody. Various models, 4 cows, 8 cows, 10 cows model. You have to choose from your number of pattern. And then the slurry, you can see the output. Yeah. Usually this chilies will grow downside, right? Yes. In our case, they are growing upside. See, they are going up. Vertical. Even the red ones are going vertical. That is because of this. They are having good good amount of strength. They are doing this. That is just because of this slurry. And I would again urge all the precautions to avoid doing literacy. We don't use Yes. This is the main thing. This thing I want to do a full video on this. I am writing everything. I want to do that after when the forest complete. जब फॉरेस्ट कंप्लीट होता है आई वांट टू डू द फुल वीडियो. These are pumpkins. We do our own pumpkins. We are trying to cultivate as many vegetables as possible. Because we are providing midday meals for all the kids. We make sure that they get all the nutrition. We weigh them regularly. We measure their height. Record of it. And we make sure that the malnourished kids get better nutrition. That's one of the hygiene, nutrition, reforestation, the self-sustenance, recycling. We are working on soil conservation, water conservation. Many things are going hand to hand along with the seva of Parikrama. The blessings of Parikrama is our Yes. core of it. All the blessings that we get from Parikrama, they are giving us strength to work harder and work better. You can see how many of them are every day. You see all the people from the house, they will sleep outside and they will open the house for Parikrama. You can see they are from all the parts of India. आप कहाँ से बाबा जी? हम रायसेन जिले से. रायसेन जिला. आप कहाँ से बाबा जी? हरदा. ये हरदा से. So we have people from Andhra, people from Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra. अरे वाह, क्या बात. आप कहाँ से बाबा जी? वो तो हर वीडियो में रहते हैं. अभी ये बाबा का वो जैसे हो गया जब नाशिक महाराष्ट्र. आप कहाँ से बाबा जी? नर्मदे हर गाँव. कोपरगाव तालुका, अच्छा, शिर्डी. अंबरी धारणगाव, नाशिक महाराष्ट्र. अरे वाह. येवला तालुका, गवणगाव. ये पुणे के हैं. वो तीनों मेरा वीडियो में हर वीडियो में रहते हैं. नाम क्या नाम है? तो बोलो. नमस्कार. नमस्कार नर्मदे हर माझे नाव प्रेम इसके काल लिए सांग बरोबर. आई सांगतो. दौड टाइमपास मात्र उडू व्हिडिओ चालू करा. टाइमपास दौड फास्ट पटकन लाकडी उघाड दे. चलो सर. बोलो पूरा बोलना का. लाइट. बोल जोर से.
अरे बोल ना वेळ करतो ना पेमा मी पॉज तुला आखरीचा व्हिडिओ चालू करायचं तुला सांग पटकन सांग पटपट आहे 1 मिनिटात सांग कोई सीडलिंग्स मालूम है? हाँ सीडलिंग्स हाँ वो जो यू हैव टू कीप 2 seeds हाँ in one gobar हाँ ये सर फीड बॉल seed balls. हाँ. you have thrown 40,000 फीड बॉल गोबर एंड मैंने सोचा था मगर वेट ज़्यादा हो गया अभी. हाँ वेट होता है मेन प्रॉब्लम है हाँ अदरवाइज इट वेरी सक्सेसफुल हाँ. Actually, I thought to bring that, but my weight is almost, my bag weight is 20 kgs. ओह क्योंकि I bought my laptop. so you are editing before posting हाँ, actually this GoPro you can only edit in laptop. You cannot edit directly in phone.